Namaste viewers. Welcome once again to another exciting episode of देखो अपना देश. हमने आपसे कहा था ना जब शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2020 को कि हम आपको दिखाते ही रहेंगे और आप और हम दोनों मिलकर एक अद्भुत सी जर्नी जो हमने शुरू की 14 अप्रैल को और किसी को यकीन ही नहीं था कि how many things are we going to see, how many are we going to show. A lot of people were even skeptical. How can you show and how can you keep interest of so many people alive on a web kind of a portal? Because ultimately travel is all about going, seeing, physically actually traveling, eating all those lovely foods. But thanks to all of you and thanks to NEGD that it has somehow, been such an amazing, beautiful journey of देखो और दिखाओ अपना सुंदर अतुल्य भारत that अब हम सब इतना अटैच हो गए हैं and I am so happy and thankful to all my viewers that every Saturday morning, if one doesn't do this, somehow it doesn't feel like a Saturday is complete. So thank you everyone for all the support. And today we're going to take you, as I said, to another exciting and a place which is full of legends. We are going to the heart of India, Madhya Pradesh. And in the land of Madhya Pradesh, further, we are going to take you to a place which is known for love, for legends around love, affection, and so much more, And it's a place I have been to a few years back, but I definitely want to go again. And once you see this episode, I can assure you that you will definitely want to book your tickets and go to the beautiful land of Orchha. If any of you have heard the legend of the place and know that the Bundela kings actually built so much over there is so much architecture, there is so much history, there's so much folklore also that happens over there that we thought it would be the most appropriate thing to do is to bring somebody who is not just born there, he's not just Bundelkhandi by domicile, but he is by heart also a Bundelkhandi. So bringing to you today Orchha is Anurag Shukla. Welcome Anurag, namaste. Namaste. And he's one of our, I should say, most illustrious guides that we have in India. And though he says that his heart and soul is there in Bundelkhand, and so he told me and he has warned me. And I met him when I went to Khajuraho. He has already warned me, and I'm warning you viewers कि ये इतने भावुक हो जाते हैं ओरछा की बात करते हुए कि अगर ये पुराने टाइम्स की तरह कहीं थोड़ी सी अपनी भावना को एक अलग रूप में भी प्रकट करें तो I think we will be, it will be a joy to watch Orchha with you, Anurag. And it's indeed the pleasure for the Ministry of Tourism to host all our amazing guides. Today is the 16th episode, which is being brought to us by the, our registered guides. And they truly showcase our incredible country in a very different way, the kind of knowledge that they have. And I must therefore also share with all of you that when you go traveling in India, even though I am an Indian and I'm born in India and I've read history, etc., etc., but when we go for touring to other parts of the country, do hire the services of a registered guide because the kind of nuances that they tell you, the kind of stories that they tell you, the experience that they have is so different. And you'll come back so much more enriched after you visit a place. So that's my humble request and a kind of sort of an appeal, let's say, that देखिए और दिखाइए अपना सुंदर अतुल्य भारत but हमारे guides के साथ. So Anurag, the web stage is all yours and let's start the journey to Orchha, dear viewers. Thank you very much, ma'am, and thank you, Mr. Ajay Singh जी. और ये मेरा सेकंड एपिसोड है जो सेकंड सीजन स्टार्ट होते साल का वेबिनार्स का. उसमें मेरा सबसे पहला एपिसोड खजुराहो टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे था. और I'm very thankful for Ajay Singh. He invited me to join this देखो अपना देश with 75 destinations with different guides. और मुझे ओरछा के बारे में बोलने को बोला गया तो मुझे रियली मैं बहुत एक्साइटेड था एक टॉपिक को लेके. So Orchha is just not a town or place where you just can see the just buildings or architecture or history. It is a place where I found the multiple dimension of one world which have relation with our life called the love. Relation between mother and a son, relation between the lovers, relation between the God and the devotee, relation between the friends, all those dimensions we can see in this small town. So today's my presentation is Orchha, the legends of Bundelkhand.
Now I'm sharing my, sorry. I'm sharing my screen now. So you can see now my slide is colored with this yellow color, mustard yellow color. Reason is that today is वसंत पंचमी. तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ज्ञान की देवी बागेश्वरी सरस्वती हमारे जीवन में ज्ञान सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि हमारे जीवन में जो अंधकारमय कोरोना हो वो नष्ट हो. So now I'm going to start the story of Orchha. We all people know about the buildings of Orchha were constructed by Bundelas. But who those are? Bundelas are not from the central India. Their origin point was Varanasi and they were the Gaharwars. And there was a king, his name was Karanpal, and he was the fifth son of his father. So he was also known as Pancham Singh. He was more religious, more honest. So he did not manage in his family. So that's why he escaped from the Varanasi, went at Vindhyachal mountain and started penance of goddess Vindhyavasini. Because he was very upset. He was disturbed by the brothers. So one day he decided to sacrifice his life to the goddess. But the moment when he put the sword on his neck, a little bit drop of blood came down. Then the goddess Vindhyavasini came and blessed him and gave a new name to him as a Bundela. And also assured him that today onwards, you people will be known as the Bundelas, and how long you will use this term, you will rule in whole this country or where you will live. So after the fifth generation from Pancham Singh, there was another king, his name was Sohanpal. He was migrated from that area, from Vindhyachal area, and he came to Mahoni. And he started his own Jagir. And that was a time, the most interesting episode of Indian history. When you are visiting in Khajuraho, and the guide is telling the area, the whole this area was known as Jejag Bhukti, and how it is turned as a Bundelkhand. So there is one interesting episode which will explain you how this Jejag Bhukti, the area of Chandilas, was turned as the Bundelkhand. So the story starts from a place called Gad Kundhar. And there is one beautiful novel written by Vrindavan Lal Verma. And this novel tells you the whole episode. The story starts how Sohanpal defeated the Khet Singh Khangar or his son and established their power in central India. तो अगर मैं इस कहानी को थोड़ा आपके साथ में बहुत छोटी सी लाइंस में शेयर करूं तो कहानी ये है कि सोहनपाल की जो बेटी थी, her name was Rup Kuwanri, and the ruler who was ruling in that fort, his name was Hurmat Singh, and his son was Nagpal. And those were the Khangars, and Sohanpal was Bundelas. So when these two people, the prince and princess, fell in love, and the Hurmat Singh asked to marry his son to the daughter of Bundelas, but the Bundelas said, no, you are not pure clan of Kshatriyas, so I cannot marry our daughter to you. So then Hurmat Singh asked, just left my territory. So then the Bundelas met with Pamar and Dhanderas, and they developed a conspiracy. And they said, that's fine, we are ready to marry our daughter to your son, but we have one kind of ceremony, welcome ceremony. In our tradition, we offer the country wine. So all the young one and all the male have to enjoy this drink. Then we will start the marriage ceremony. And what they did, they offered that poisonous, contaminated wine to all the men of that family and killed them and assassinated them. They murdered all the male people.
and captured the fort. So this was the starting, that black starting of Bundela period was started. It was continued till to 1531 when the next king came. Here I want to show some beautiful photographs of Gadkundhar. So many people who visit to Orchha or Datia, might be guide will say you, or maybe the guide will say you, the first capital of Bundela was Gadkundhar. So where is this Gadkundhar? It's a really very interesting place. It's a beautiful place. It is a beautiful building also. You can see beautiful photographs. So when you're coming from Orchha to Khajuraho on the way, there's a one village called Niwadi. From Niwadi, there's a one village called Gurad. From Gurad, it is 18 kilometers away. The road is very fine and architecture is beautiful and building is magnificent. It is a very nice place to visit. So next time when you're coming to Orchha, please try to visit in this place. And as I said, so when the Bundela ruler was ruling in Gadkundhar, always they were not feeling good because the history was very dark and they don't have that kind of social respect. So once this king, his name was Rudra Pratap Singh, wandering here or there during the time of hunting, he reached in a place that today is called Orchha. So how this name came, it's very interesting. So एक कहानी के अनुसार जब वो शिकार कर रहा था, शिकार करते करते भटकते भटकते जब वो थक गया, so he reached in that place where still we have a temple of Lord Shiva. It is on the bank of Betwa river. It is next to the Jahangir Mahal. So he just reached over there and met to a priest and just asked to him, I saw a dream of a beautiful town where Lord Rama is staying. And I'm very interested to start a new town or new capital. So could you suggest me a place where I can construct a new capital of Bundelas? Then that priest said, yes, it is the right place for that place. So then automatically one word came from his mouth. Oh no, it is very short enough. Orchha. Orchha means it's very short, very limited, because it was just a small island between river Betwa and a small tributary. So that's the word Orchha came, but that priest said, don't worry. I'm not talking about your big capital. I'm talking about the place where Lord Rama will come in future. So that's the way the foundation stone was laid in that place. And the first building called Raja Mahal was started by Rudra Pratap Singh in 1530, which was continued by his son. His name was Bharati Chandra, and he also started construction of Rani Mahal. Here we have some beautiful photographs of Raja Mahal. The beauty of this building is when you will enter, it is divided in 3 different buildings. First, there is a beautiful Diwane Am, which is beautiful paintings where the king was meeting with all the people. It has 4 different halls as per the caste system. All the royal family and ministers sitting in upper hall. Then in the second hall, all Brahmin class was sitting. In the third hall, all the Kshatriyas were sitting. On the fourth, all business class was sitting. But all the lower class was standing outside. So that division you can see in this Diwane Am. Then the main building is divided in 2 parts, Diwane Khas and the private chamber of king. Here you are watching the courtyard of the main palace. And the main building also divided in 4 different levels. In the lower level, there are the beautiful rooms. Those were used during the time of summer. Then there are the 4 principal chambers on the first floor. And all those are beautiful painting plan as per the season. When the king was staying during the spring season, it has beautiful painting of Krishna is playing Holi with the Radha. If you are visiting towards the eastern chamber, you will see there the beautiful lotus and the boat ride is there, a lot of fish and the birds are in the river. So that was for the rainy season. And another chamber is for the winter, another chamber is for the summer. So 4 different chambers were constructed as per the season. But all beautiful rooms have this kind of paintings. Look at the ceiling or look at the wall. So on the ceiling they painted all the stories of Bhagavata, like all incarnation of Vishnu,
starting from Matsya, Kurma, Varaha, all stories are there. And also, there are beautiful paintings called the Raga Ragnis, where the Krishna is mating with Radha, and the color plan is set as per the season. But now I'm coming, as I said, my today's episode is based on the stories of love angle at Orchha. So, why Orchha is famous? It's famous for the building, but Orchha is the only place where Lord Rama resides equal in the label as at Ayodhya. And the story is very interesting. As per the story, the king was a great devotee of Lord Krishna, and the queen Ganesha Kuwanri was a great devotee of Lord Rama. Once when they visited to Vrindavan and they enjoyed the whole procession at the Vrindavan, and then the king just taunted to her, how is your Lord Rama? Now, can you want to change the mind? Then queen said, no, still I love my Lord Rama. So then king felt a little bit upset and insulted. So he said, oh, that's fine. If you really believe on Lord Rama, just go. And I want to see your Lord Rama in my capital. So she said, that's fine. And she left. She left the capital and went to Ayodhya and started penance at the Ayodhya. She took about 6 months, but Lord Rama didn't came in a dream. So one day she decided to commit suicide. So she started approaching toward the river Saryu. When she was just reaching and just approaching inside the river, then she listened the voice of a baby. So you can see a photograph where the Ganesh Kuwanri sitting and the Lord Rama in her lap. So then Rama said, stop, stop, stop. Oh mother, I'm here, I'm ready to come with you. But there are 3 conditions. So you can read on the screen. The first condition was that the journey will start on Pukhya Nakshatra. As we know, as in Hindu culture, the Pukhya Nakshatra is the most auspicious nakshatra when we do anything. So he promised that I am ready to come with you, but the whole journey should continue in this nakshatra. Second is that you will conduct the whole journey with your barefoot, and you will carry that idol as in the form of baby. And third is that how long you will keep me in the lap, or I will not touch the earth. I will be movable. But the moment when I will touch the earth, I will not move. It could not be shifted. So when this condition was accepted, then a message raised to Orchha, now queen is starting her journey and coming with the idol of Lord Rama. So then king started construction of a temple called now Chaturbhuj temple. So look at this photograph. This is called Chaturbhuj temple. And look at the architecture. It was constructed in the highest point of that town. The whole building looks like a big, massive architecture like a fort. And the shikhar is very high. A dome structure is also there. So it was constructed for Lord Rama. But when the idol was raised in the town, something was not completed. That's the reason the queen carried the image of Lord Rama inside her palace called Rani Mahal. And it was just fate of that queen. Just for a moment, she lost that memory or that thought. She placed that image in her bedroom. In the next morning, when the auspicious ceremony was started and all people were waiting to the Lord, Lord Rama is coming, they were shouting. They were doing the slogan of Rama, but the figure was not moved. And as per the condition in that time, only one male was permitted to enter in the room of queen, that was the king.
So the moment when the Rama was in the bedroom of the queen, so king himself, Madhukar Shah, realized that, now I'm not the king of this estate. Now the king of this estate is Lord Rama. So here he declared Ram as a Rama Raja, a Rama Raja Sarkar. So now Rama is not in the temple. He is living in the palace of queen. So now this building, the palace of Queen Rani Mahal, is turned as a temple of Rama, and Chatur was just there. They put the image of Lord Krishna and Radha. So all now ceremonies are conducting in this palace. But the most important thing is here. I just wrote some kind of chopai with these images. Here you can see. Here we have the Rama image that's in black stone. The Sita on the right side, actually it is on left of Lord Rama, it is in white marble. Then the Lakshman and the queen, his wife is there. And the chopai is there. श्री राम राजा सरकार के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, शयन अयोध्या वास. The meaning of this chopai is the Ram Raja is living in two different places. The whole day he is staying in Orchha, but at the night he returned back to the Ayodhya. Here I want to raise some specific points about this temple. The important point for this temple is it is the only temple in this country where during in morning procession or in the evening procession or arati, the state officer tribute the guard of honor to the Lord. So you can see one policeman standing in front of the main gate of the temple. So when the prayer is going to start, first you pay the guard of honor to the God, then the arati starts. It's in the morning or evening time. When you listen, you will see it. And also because the Lord came in this town in the Pukhi Nakshatra, so even today when we have the Pukhi Nakshatra, you will see hundreds of people. They come and take dip in the river Betwa and pay tribute to the Lord Rama. And also because this city has a connection with the Rama, so all ceremonies related with Rama is also conducted here. So Ram Janmotsav is a main ceremony over here. Then the Rama Vivaha is also very important ceremony in this town. Dashera is also very important ceremony of the town, and Deepavali. So all those ceremonies are very important, very interesting. So whenever you have that kind of schedule, please try to remember when you are arriving in this area. Now I'm coming on the second story. It is very interesting. It has own historical evidence, and it is a story about one beautiful lady. She was just not a dancer, she was a great poetess. Her name was Rai Praveen. So she was disciple of very great famous poet. His name was Kesav Das. And she learned all the different poetic sense from him, and also performing dance in the court of Indrajit. And Indrajit fell in love with this beautiful dancer. And as we know, the great Akbar the Great, always loved the different expert in his court, like now Ratnas were there. So when this message was raised in the court of Akbar, there's a one beautiful lady, as we know about the story of Anarkali. So when he found there's one great poetess and a great dancer in the court of Orchha, so he just sent a message to Indrajit, I want this beautiful lady in my court. And Indrajit initially said, sorry, sir, she is my girlfriend, whatever. I don't want to send it. So what happened? He imposes a big tax or big fine on him. And with the negotiation with Birbal, it was managed. But Rai Praveen realized that this state is in suffering due to me. So then she approached to the Indrajit and said, my dear, I want to leave this state just for the sake of security. So she reached at Agra, but before to reach at the court of Akbar,
she wrote a letter and sent at the court of Akbar. She wrote 2 lines. You can read the lines on the screen. Binti Rai Praveen ki suniyo sah sujan, jhuti patar bhakat hai, bari bayas swan. As we know that Akbar could not read, so he gave this poem to some experts. So they read, but they didn't understand. So then this poem, this couplet came on the hand of Birbal, because Birbal have a good sense of knowledge. So when he read this poem and understood the meaning of this couplet, he said, "My lord, I'm sorry, I can't translate. I can't tell the real translation of this poem." So then Akbar was a little bit surprised. What's wrong in this poem? Why you're not explaining the real meaning of this poem? Then he said, "Sir, it's very, very upsetting." So then Akbar said, "Don't worry, just tell me the real meaning of this poem." He told, so as I wrote in English, "O Lord of all wise men, please listen the prayer of Rai Praveen. Jhuti patar bhakat hai." Jhuti means leftover of the king. It means she is the leftover of Indrajit. And that time the leftover of king was taken by only 3 persons. The servant that we call the bari, or the crow, and the dog. So it means that anyone who will enjoy her, that may be a dog or a crow or a barber. So now it's up to your intelligence, Lord, what you want to be. So first he was a little bit upset and anger and furious, but at the same time, he was just enjoyed that sense of lady. How beautiful she portrayed her emotions with the 2 lines, because she was a great poetess. That's why she was titled as Rai Praveen. Praveen means very clever. With the full honor, she returned back to the Orchha. Then the king made a beautiful palace to her. That's now called Rai Praveen Mahal. And earlier it was known as Ananda Mahal. It is a beautiful garden with beautiful canals and water fountains. It is a 2 stories. The ground floor is a fountain and hall. The first floor have beautiful paintings and hall that you can see in this photograph. Still, you can see beautiful painting on the wall where the dancer that Rai Praveen is dancing, lady blowing fan to him. So it was second story that shows how the beautiful love was managed by an intelligent lady. But third story is about the friendship. So actually that Madhukar Shah has 2 sons. One was Ram Shah and second was Vir Singh. As per the tradition, the elder son should be the king of state. So Ram Shah became the king of state. But Vir Singh, he was more smarter, knowledgeable, and administrative qualities. So, but he was not become the emperor of that, the king of Orchha. So he was appointed as the Jagirdar of Dhamoni. So he was ruling over there, but at the same time he got this information. The Prince Salim left the capital due to some reason, especially reason is, we know, due to the love affair with Mehrunisa, later she known as a Nur Jahan, and he just occupied some part of Awadh and Manikpur, and he declared his capital at Allahabad. So Vir Singh have great interest about the political power or the control in central India. So he approached to Salim and made a relationship with him, a friendly relationship with him. At the same time, Akbar ordered to Abul Fazl just conquered the Allahabad and that territory and just carry Prince Salim as a prisoner of war. So when this message was reached to Salim, he sent that message to Vir Singh.
Okay, this thing is going to happen with me. Now it's up to you how you will manage it. So then Vir Singh Judio, for the sake of friendship, managed a kind of a plan. So when Abul Fazal was coming back from the Deccan, he counter fight with Abul Fazal at Atri. It's very close to Gwalior. He fought with him, but his commander Champat Rai beheaded, desplatted the head of Abul Fazal and sent to the Salim. Just think about the risk. One Jagirdar chopped the head of commander of Akbar. What could happen? He took that kind of risk for his friend. And at the end, what happened? Akbar realized that now I lost the power. And Salim is the only option to maintain the power of Agra. So when Salim became the emperor of Agra and declared as a Jahangir, so Vir Singh also got a lot of benefits and he became the lord of Orchha. And he constructed a massive, beautiful, magnificent architecture in Orchha, which is called Jahangir Mahal. Actually, it is in 5 different layers. So sometimes it's also called Panch Mahal. You can see beautiful photographs is there. But what are the qualities and beautiful characteristics, features of this building? If you are coming over here, you will see it. It is a square plan, and all the sides are about 100 meters long, and it is more than 136 chambers. Just 100 rooms are on basement. So you can categorize this building like the basement was for the peons and servants, the first floor for the queens and family members, the ground floor for the family members, and the first floor where the king was living. And it was constructed as per the natural ambience for the sunrise, for sunset, for the full moon day. All those things are there. And all rooms and courtyards are beautiful geometrical drawings and design. Those are painted with blue and turquoise blue enamel that I will show in my next photo. And main gate also have beautiful decorations, and stucco art is also there. If you notice here you can see the dome architecture. So it was a first building which have very identical architecture with Fatehpur Sikri. Like when you're visiting the Jodhabai Palace in Fatehpur Sikri, you can see there are the domes in 2 different sides. Some domes are ribbed domes, some are plain. So all those things you can find here. It is the same kind of brackets, it's the same kind of decoration, trellis work. It's very identical with Jodhabai Palace of Fatehpur Sikri. So you can see the beautiful miniature chhatris are there, the kiosks are there, and also beautiful structures are there, and trellis work in sandstone is here. Look at the animal work, the blue and turquoise blue. So it's the beauty of this palace. Each and every room and courtyard have separate planning of design. They are very identical. There's no kind of a cut and copy. Each and every area is very separate one. Like it's so beautiful. If I will start my sightseeing, I can take more than 3 hours just one building because it is so many variations, beautiful details to visit. Look at the brackets, elephants. Hundreds of elephants are on bracket, keeping with lotus buds, because elephants represents the prosperity, the sign of Lakshmi. So as I said, it's a beautiful building. Now I'm coming the most emotional and the most important story of Bundelkhand. This was the episode which glorified the Bundelas and spread the boundaries and cracked the boundaries, captured the whole boundaries of Chandelas, and Chandelas was disappeared. That emotions. So now here I'm going to use my own language because English have some limitations to express my language. तो आज मैं जो आपको कहानी कहने जा रहा हूं, that story is coming from my heart.
Reason is this because when I was young, I saw one drama that were known as, or that's called नौटंकी. नौटंकी में एक्चुअली क्या होता है कि नगाड़े होते हैं. उस वक्त माइक्स नहीं होते थे, उस वक्त उतनी लाइट नहीं होती थी. तो हमारे यहाँ पे एक तरह की आप मशाल कह लिए, आपको क्या बोलना चाहिए, उसको गैस लालटेन कहते थे. गैस लालटेनों को जलाया जाता था और इतनी आवाज, बुलंद आवाज होती थी, इस तरह के इमोशंस होते थे कि हम लोग कहानी सुनते सुनते रोना शुरू कर देते थे. और ज्यादातर हरदौल चरित्र सबसे पॉपुलर स्टोरी होती थी जो हम लोग देखते थे. और ज्यादातर लोग जो ओरछा आते हैं, वो जो मैंने 3 कहानी सुनाई, क्योंकि राय प्रवीण महल भी लोग जानते हैं, जहांगीर महल जानते हैं, रानी महल भी जानते हैं, राजा महल भी जानते हैं, पर कोई भी व्यक्ति, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वहां एक और जगह है जहां पे कोई भी स्थानीय बुंदेली व्यक्ति जब ओरछा दर्शन राम राजा के करने जाता है तो उसकी यात्रा बगैर हरदौल जी की बैठका की पूर्ण नहीं होती है. जो लोग पूजा अर्चना करने राम राजा मंदिर में जाते हैं, उसी तरह हरदौल की बैठकी में जाते हैं. और जब भी घर में कोई भी पूजा होती है, कोई भी शादी होती है, तो उनको निमंत्रण पत्र दिए बगैर हमारे यहाँ शादी पूर्ण नहीं होती है. ऐसा कोई गांव नहीं है सेंट्रल इंडिया में जहां पे हरदौल जी का चबूतरा ना हो. या कभी आप जब सेंट्रल इंडिया से निकलें और किसी चबूतरे पर आपको कोई घोड़ा रखा हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए वो हरदौल जी का चबूतरा है. और उसकी स्पेशलिटी ये है कि जब हम शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले उनको हम निमंत्रण देने जाते हैं कि हे देव, आप हमारे घर में आए और हमारी शादी को संपन्न करें. तो ऐसा हरदौल ने क्या किया कि हरदौल एक जो साधारण से प्रिंस थे, वो एक राजा के तौर पे, एक देवता के तौर पे पूजे जाने लगे. तो वो कहानी मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं. लकीली मुझे एक कॉमिक के कुछ फोटोग्राफ भी मिल गए थे, तो मैं जो अपनी कहानी, मैंने स्टोरी लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है ताकि जो व्यक्ति हिंदी ना समझ पाए वो स्टोरी लाइन को पढ़ सकते हैं. बाकी छोटे छोटे ग्राफिक्स भी मैंने नीचे डाल के रखे हुए. सो जो कहानी है, तो मधुकर शाह के, जैसे मैंने बोले, राम शाह और वीर सिंह जुदेव 2 बेटे थे. वीर सिंह जुदेव की कई सारी पत्नियां थी. उसमें से बड़ी पत्नी के जो पुत्र थे उनका नाम जुझार सिंह जुदेव था, और दूसरी पत्नी के जो बेटे थे उनके बेटे का नाम हरदौल था. और हरदौल की माँ बहुत छोटी उम्र में जब खत्म हुई, तो जुझार सिंह जी की जो वाइफ थी चंपावती, उन्होंने उनका लालन पोषण किया. तो वो जो भाभी साथी, उनमें हमेशा माँ का रूप देखते थे. और हमारे मध्य भारत में देवर भाभी के बीच में एक विशेष रिश्ता होता है, हंसी मजाक का रिश्ता होता है, काफी अंतरंग रिश्ता होता है. तो वो एक, दोनों के बीच में वो रिश्ता भी था और एक माँ का रिस्पेक्ट भी था. और ये चीजें लगातार चल रही थी. और जब वीर सिंह जो खत्म हुए तो महाराज जुझार सिंह बने और उनके दीवान हरदौल जी बने. और उस वक्त उनकी उम्र जस्ट 19 ईयर्स थी. तो अगर आप नीचे ग्राफिक्स में देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, एक तरफ जुझार सिंह जी हैं और उनकी पत्नी और वो यंग हरदौल जी हैं, दूसरी तरफ जब वो दीवान बने तो घोड़े पर बैठे हुए हैं. नेक्स्ट अगर आप क्लिप देखें तो एक खास बात थी कि हमेशा से जो मुगल दरबार के राजा थे, वो चाहते थे हम कैसे सारे हिंदू राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाएं. तो जब वीर सिंह देव को वो नहीं हरा पाए, तो नेक्स्ट जनरेशन, विशेष तौर पर शाहजहां के टाइम पे ये कोशिश की गई कि कैसे हम ओरछा पर अपना आधिपत्य करें. उसके लिए उन्होंने जुझार सिंह को अपने यहाँ पे इनवाइट किया और जुझार सिंह को लगातार अलग अलग युद्धों में बाहर भेजते रहे. और उसी समय पे जो मुगल सेनापति थे, वो लोग ओरछा पर आक्रमण करते थे. यह मान्यता है कि हरदौल पर राम की बहुत विशेष कृपा थी, जिस कारण से छोटी सी उम्र में भी वो अपने गौरेला वॉरफेयर और दूसरे डिफरेंट तरह की वॉरफेयर में उनको लगातार हराते रहे.
और ओरछा को कभी भी कोई भी मुगल कमांडर जीत नहीं पाया, जिस कारण से उनको ये रियलाइज हुआ कि जब तक हरदौल ओरछा में है तब तक कोई भी व्यक्ति ओरछा को नहीं जीत सकता। तो उन्होंने देखा ऐसे तो कुछ संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने एक थ्योरी प्लांट की कि हरदौल और जो उनकी पत्नी है चंपावती, उनके बीच में क्यों ना हम एक गलत रिश्ते की बात पैदा करें। तो फिर दरबारियों ने, विशेष तौर पर मुस्लिम दरबारियों ने उनके कान भरना शुरू किया। आप तो महाराज सब हमेशा बाहर ही रहते हैं और वहां आपकी पत्नी और यंग आपका जो जवान देवर है वो अक्सर साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और कहते हैं ये टेंडेंसी है, एक फितरत है एक आदमी की, कि अगर उसके मन में थोड़ा सा यह बीज डाल दिया जाए तो ये जहर बनता जाता है और ये रिश्ते किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कहते ये हैं कि ये चीज देखने के लिए कि इनके रिश्तों में कितना फर्क है, खुद महाराज जुझार सिंह ने अपनी पत्नी से बोला कि आप मेरे भाई को जहर दें। और अगर आप नीचे फोटो में देखें तो देवी ने मना की कि नहीं महाराज, संभव नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा, आप ये कैसे सोच सकते हैं, मैं उसको जहर नहीं दे सकती। तो फिर बोले ठीक है, अगर आप ऐसी बात है तो फिर कोई बात ही नहीं है, मैं खुद जहर खा के मर जाता हूँ। यह भी संभव नहीं कि पत्नी यह स्वीकार करे कि उसका पति सिर्फ इसलिए जहर खा ले कि मेरे संबंध किसी और से है। तो अपने पति से संबंध स्थापित करने के लिए उसने यह स्वीकार किया। और कहते हैं कि फिर चंपावती ने जहर भरा खाना बनाया और हरदौल को बुलाया। और जब हरदौल आए तो उन्होंने गौर किया कि चंपावती जो उनकी भाभी सा है वो सामने नहीं आ रही। तो उन्होंने पूछा कि भाभी सा ऐसी क्या बात है, आज खाने में आप साथ में नहीं, अक्सर आप बैठती हैं। तो चंपावती एकदम से रोने लगी, बहुत ज्यादा अपने आप को अनियंत्रित हो गई। और उस अवस्था में यह हुआ कि हरदौल ने कारण पूछा कि भाभी साहब बात क्या है, आप रो क्यों रही हैं। फिर उन्होंने ये बात कही कि आप इस खाने को मत खाइए, इसमें मैंने जहर डाल के रखा हुआ है और कारण यह है। फिर हरदौल ने कहा भाभी साहब ये बात रिश्ते की है, इसमें मेरी जान उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर मेरा जीवन रहेगा तो भी ये बहुत खराब है। तो कहते हैं इसके बाद में हरदौल ने वो जहर भरा खाना खाया और जहां उनके यहाँ समाधि है राम मंदिर के पास में, वहां जाकर बैठ गए। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उस जहरीले खाने को उनके कुत्ते ने खाया और उनके नौकर ने खाया और हरदौल के साथ वो भी खत्म हुए। तो उनकी समाधि के बगल में उन दोनों के मंदिर भी हैं। तो एक कहानी तो यह है, परंतु उनके अमरत्व का जो एपिसोड है जो उनको देवत्व पद पे ले जाता है, ये कहानी एक और अवस्था में जाती है। यहाँ थोड़ा इमोशंस बहुत कठिन हो जाते हैं। कहानी यह शुरू होती है कि भारतीय परंपरा के अनुसार जब एक बहन अपने बच्चों की शादी करने जाती है तो हमारे एक रस्म होती है भात परसने की, कन्हार लेने की। तो बहन अपने भाइयों के यहाँ निमंत्रण देने आती है और जब उनकी बहन कुंजावती आती है और उनको ये जानकारी मिलती है कि उनका छोटा भाई मारा गया है, तो फूट पड़ती है, रोना शुरू कर देती है। और जब वो समाधि में जाती हैं और वो रोती हैं कि भाई अब मैं किसके भरोसे इस कार्य को करूंगी, तभी उस वक्त एक आकाशवाणी होती है और वह आकाशवाणी कहती है कुंजा मैं आज भी जिंदा हूं, मेरा शरीर जो जरूर खत्म हुआ है पर मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। और उस कथा के अनुसार फिर आगे कहते हैं कि वहां जो एक हरदौल का दोस्त था, जो सेठ था, उसके स्वप्न में हरदौल मारा जाए और उन्होंने आदेश दिया कि तुम सारी तैयारियां करो और कुंजा के आ जाओ शादी के समय पे। और जब वो वहां पहुंचा, सारी क्रियाएं शुरू हुई, सारे कार्यक्रम शुरू हुए और किसी ने दूल्हे के कान में कह दिया कि हमने सुना है कि जो हरदौल महाराज है वो यहाँ पे आए हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे।
तो हम लोग कहते हैं कि जब वो भात परसाई होती है तो जो दूल्हा बैठता हो तो मामा जो है, लड़की का मामा जो होता है, वह भात परसता है। तो वह दूल्हा जिद करने लगा, नहीं मैं तब तक भात नहीं छूऊंगा जब तक कि मामा मुझे आके दिखाई नहीं पड़ेंगे। सबने बोला आप कैसी जिद कर रहे हैं, उनका शरीर नहीं है, वो कैसे आ सकते हैं? तो कहते हैं फिर आकाशवाणी हुई कि कुंवर साहब चिंता मत करिए, मैं यहीं पे हूं और आप अपने सामने पर्दे पे देखिए। वो कहते हैं सामने पर्दे पर एक छाया आई और उस छाया में हरदौल जी की छवि थी। वह दिन था जिस दिन के बाद हम लोगों के अंदर से डाउट खत्म हो गया कि हरदौल महाराज अब नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो हरदौल के गाने गाए जाते हैं। हरदौल चरित्र के बगैर हमारी शादी पूरी नहीं होती। तो यह एक घटना थी जिसने गांव गांव में बुंदेलाओं के नामों को पहुंचाया, स्थापित किया। तो ओरछा वो जगह नहीं है जहां पे जस्ट आप आते हैं, एक साइट सीइंग करते हैं, चले जाते हैं। अगली बार जब आप आए और खजुराहो और ओरछा की साइट सीइंग करें, हरदौल चबूतरे में जरूर जाएं। ये हरदौल चबूतरा बहुत छोटा सा एक बाग है जिसको हम फूल बाग कहते हैं। उस फूल बाग के बीच में एक जो पिलर्ड आपका बैठके है, इसके चारों ओर गार्डन है, फाउंटेन है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इसके अंदर ये हरदौल महाराज की मूर्ति है। उनकी बैठकी, उनका बिस्तर है, उनकी तलवार रखी रहती है और रोज यहाँ भी आरती होती। और आज भी भगवान की तरह जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका मुंडन यहाँ होता है। जब भी शादी के निमंत्रण छपते हैं तो राम राजा के साथ में निमंत्रण कार्ड यहाँ दिया जाता है। और यहाँ जो जाली लगी हुई है, लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के उनपे गांठ बांधने भी आते। तो यहाँ लगातार ये क्रियाएं आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ है। मैं आपको ओरछा के बारे में पूरे एक अलग एपिसोड दिखा सकता था, इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ बात कर सकता था, पर मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं अजय सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस 75 डेस्टिनेशन विद गाइड्स के साथ में मुझे इनवाइट किया। और विशेष तौर पे मैं बरार मैम का बहुत हृदय से आभारी हूं कि जो मुझे इस तरह से एक स्नेह देती हैं और मुझे बार बार अवसर देती हैं लोगों से जोड़ने का। और अगर आपको लगता है कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं, मैं हमेशा हाजिर हूं। आप मुझे बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप खजुराहो के बारे में और जानकारी देख सकते हैं। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत आभारी हूं सभी आप लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें देना है आपको अनुराग, इतनी सुंदर स्टोरी। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स यू विल नाउ अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज टेलिंग यू दैट there's going to be a lot of emotion attached in the tales that Anurag is going to bring us today. And doesn't the story touch you? And not only does it, it is also a reminder of so many things that tourism in India is about. Tourism in India is not just about looking at the architecture, monuments. Yes, wo to hai hi, because that itself is absolutely incredible. But these are the stories. And I was reading somebody's comment who said that they had been to Orchha, but they had not heard this story. So that's where we always encourage all of you that when you travel, when you go and see these absolutely beautiful places, do check out and go and travel and visit the places with a registered guide over there, because your quality of experience will be very different if you go with a specialist, because these people have spent years and years over there, and they have researched, they have done a lot of work to actually bring to you the stories of not only incredible India, but of incredible Indians. And I think that's where the beauty of it all lies. But Anurag, a few questions that are coming to me on the side, and we do have time, so we'll quickly take them. How does one, people are asking, how does one reach Orchha? Which is the best way to get to Orchha? Ma'am, it's very easy if you're coming from Delhi. So we have a lot of trains from Delhi to Jhansi. Jhansi is the nearest railway station, and it's just 18 kilometers from Jhansi to Orchha. And we have a lot of connectivity, like a lot of cars and taxi and everything is running. So very easily you can arrive at Orchha. And we have very nice kind of hotels, all beautiful facilities in all different categories hotels we have. And ambience is so beautiful, like
It is very neat and clean. Beautiful river is there. We have also Madhya Pradesh tourism also running river rafting facilities is also there. So it's, if you are coming by the flights, we don't have any close air stations. So you can arrive to Gwalior. A lot of their flights are in Gwalior. When you're coming from Gwalior, you can arrive to Datia. Datia is also a very nice place of Bundela. We have nice palace of Bundelas are there. Then you can come to Orchha. So it will be another great sightseeing. When you're coming from Delhi to Gwalior, you will do the sightseeing of Gwalior. From Gwalior, you will arrive to Datia and Orchha, and then after Khajuraho. Then you can fly back from Khajuraho to your destination, or you can arrive to Khajuraho, do the sightseeing of Khajuraho. And now we have very fantastic road, 4-lane road. Within 3 hours, you can arrive from Khajuraho to Orchha by the car. Stay one night in Orchha, do the sightseeing. Then you can fly back from Gwalior. So now we can say that we have complete tour itinerary. You can start from Gwalior to Khajuraho, or from Khajuraho to Gwalior. Excellent. So now, viewers, that brings me therefore to this other part that I always talk about, that the kind of connectivity that has increased in India in the last few years is just phenomenal. The number of airports that are there, the road quality that has expanded over the last few years is truly, truly connecting India like never before. As Anurag just mentioned, getting to Orchha is as simple as that. There are good quality roads. You can fly down to Gwalior. You can actually take a train to Jhansi. And Jhansi itself, I must share with you that I think practically कहीं से कहीं भी train India में अगर जा रही है, वो झांसी को पार करती है somehow. Jhansi is always there. So I'm sure if you're coming from South India, whether you're coming from West India, whether you're coming from East India, कहीं ना कहीं जो झांसी का स्टेशन है ये आपको मिलेगा. And from Jhansi, as he already indicated, there are cars, it's not far at all, there are taxis, there are hotels, and of all budgets. So, and there's so much else to do. I'm going to ask Anurag one more question, and then I'll ask Dr. Ajay Singh also if he has a question. दतिया में कोई एक टेम्पल मंदिर बड़ा फेमस माना जाता है, और दतिया में कोई मेला होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मैम, एक्चुअल में एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक महाराज हुए, उनको हम लोग बलखंडेश्वर महाराज कहते हैं. एंड दैट्स द ओनली तांत्रिक इन द वर्ल्ड जिन्होंने 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याओं को एक साथ सिद्ध किया है. जनरली एक महाविद्या ही सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है. महाविद्या मतलब एक शक्ति को अपने अंदर धारण करना. सो दैट वाज, उनको हम लोग बगलामुखी बोलते हैं, और उनको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड पीताम्बरा पीठ. तो बगलामुखी एक बहुत, और पीताम्बरा एक बहुत बड़ी सिद्धि है, महाविद्या है. तो वो पीठ वहां सिद्धि की थी उन्होंने. साथ में उन्होंने एक दूसरी महाविद्या को सिद्ध किया था, आई एम मिसिंग द नेम. सो अगर कोई तांत्रिक व्यक्ति है, अगर आपके अंदर कभी जीवन में कोई कष्ट आता है, किसी भी तरह का कष्ट आता है, आप दतिया में जरूर आए, बगलामुखी पीठ पे. वहां पे आचार्य लोग हैं जो आपके लिए पूजा अर्चना करते हैं. अगर आप नवरात्रि में आके वहां पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत कुछ वहां ठीक होता है. तो वो एक बहुत फेमस जगह है तांत्रिक लोगों की, और मतलब शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है. तो और जैसे मैंने बोला कि पैलेस बहुत सुंदर है, मगर पंचमहल जो है अद्भुत पैलेस है, वो ओरछा से भी बहुत सुंदर है. Okay. So see, viewers, there's so much to do. And Khajuraho चले जाइए तो Khajuraho में तो the temples are so famous, and Khajuraho से बहुत दूर नहीं है Panna, so you can meet some wildlife. One more thing, if people, there is also very small beautiful pilgrimage of Jain people called Sonagiri. अच्छा. एक पहाड़ी है जिसमें सैकड़ों जैन मंदिर हैं, और करीब 100 साल पुराने जैन मंदिर है. वो भी एक बहुत सुंदर जगह, घूमने लायक जगह है. वो ऑन द वे दतिया के पास ही पड़ता है. अच्छा, वेरी गुड. सो देयर सो मच टू डू. तो अगर आप ये सोच रहे थे आप एक दिन के लिए चले जाएंगे और बस ओरछा देख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला. थोड़े 2-3 दिन और जोड़िए, आसपास घूमिए और देखिए अपना सुंदर अतुल्य भारत. अगेन एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रही हूँ, विच अ व्यूअर हैज आस्क्ड. वो चाहते हैं कि आप थोड़ा बुंदेलखंडी का कोई मुहावरा बुंदेलखंडी स्टाइल में ही कहिए. अरे भैया क्या कहिए, हम आप सबका हमारी राम राम. अगर बुंदेली में बात करूं मैं मैम, तो हम लोग जिसे अवधि कहते हैं, अवधि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा रीजन जो है, कहते ना कि हम लोग बुंदेलखंड की बात करते हैं. बुंदेलखंड में अपने आप में बहुत सारी डायलेक्ट हैं. जैसे मैं आपके सामने बोलूं एक सेंटेंस,
कि आप कहां से आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग बोलते हैं भैया अपन कहां से आ रहे. ओनली दिस सेंटेंस विल रिपीट इन डिफरेंट टोन्स. किताएं से आ रहे, किताएं जा रहे, कहां के आओ, मतलब एक वी हैव डिफरेंट टोन्स इन डिफरेंट एरियाज. पन्ना वाला हम लोग टोन से पता लगा लेते हैं बुंदेलखंड में ये पन्ना वाला है, ये सागर वाला है, छतरपुर वाला, झांसी वाला है, ये मुरैना वाला है. तो बुंदेलखंड बहुत बड़ा है. और हमारे बुंदेलखंड में एक और अलग भाषा चलती है जिसको तुलसीदास यूज करते थे. जैसे कुछ लोग कहते हैं ब्रजभाषी या अवधी, एक्चुअल में उसको लोकल लोग बोलते बनाफरी. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं आप कहां से आ रहे हैं, क्या भैया कहां से आ रहे, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल कहे भैया कहां से आवत है. सो दैट्स अनदर टोन. तो हमारे यहाँ बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज को एक साथ करते हैं. मैं अगर खाने की बात कहूं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ बुंदेली में बोलूं, तो हाँ, मैं हमारी पूछने कहावत है. वाली थी आपसे, खाने की बात भी जरूर तो हमारी करेंगे. कहावत है कि महुआ मेवा बेर कलेवा गुलगुच बड़ी मिठाई, जो जे तीनों खाने हो सो बुंदेलखंड में करो सगाई. मीन्स इफ यू लाइक some dishes from the mahua or the chironji meva, it is from this area. mahua meva बेर. तो यहाँ के लोग महुए का कलेबा करते हैं, हम लोग डुबरी बनाते हैं, हम लोग हर खाने में चिरौंजी डालते हैं. और आपका जो बेर होते हैं, बेर को बॉईल करके हम लोग उनको खाते हैं, ये हमारे नाश्ता है. महुआ मेवा बेर कलेबा. गुलगुच मतलब क्या होता है, हम लोग ठंडी के समय पे महुए को रोस्टेड करते हैं, गुड़ लेते हैं, तेल लेते हैं, उसको कूटते हैं, जैसे गजक बनती है ऐसे हमारे यहाँ पे एक फूड बनता है, उसको हम लोग गुलगुच बोलते हैं, और उसको हम लोग खाते हैं. उसका टेस्ट अलग होता है, गजक जैसा होता है, और वो बात काफी गर्म होती है. तो लोग कहते हैं अगर आपको ये सारी चीजें खानी है तो आप बुंदेलखंड में शादी कर लीजिए, आपको मुफ्त में खाने मिलेगी. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो खैर, अगर आप शादी नहीं भी अब कर सकते, क्योंकि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कैसे करेंगे आप दोबारा, लेकिन फिर भी आप बुंदेलखंड और ओरछा जाके ये सब खाने जरूर खा सकते बिल्कुल हैं. ठड़ूले खाइए, आप सब कुछ खा सकते हैं. वेरी नाइस. सो ये खाने की क्योंकि बात चल पड़ी और मेरे मन में भी था, और हम जब खाजुराहो गए थे, एक तरफ पूरा बुंदेलखंडी सेक्शन रखा गया था खाने का, और हमने सबने केवल वही खाया. दो चार चीजें बताना चाहेंगे सब व्यूअर्स को जो खास तौर पे बनती हैं बुंदेलखंडी खान पान में. सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ पे इस ठंडी में विशेष तौर पे एक विशेष तरह की पूड़ी बनती है. उसमें हम लोग दाल, चावल और कुछ रॉ मिलाते हैं, उनकी पूड़ियाँ बनाते हैं, उसको बोलते हैं ठड़ूला. और जब वो पूड़ियाँ बनती हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, तो बड़ी वो क्रिस्पी रहती है और टेस्ट में अच्छी होती है. दूसरा एक सबसे कॉमन टेस्ट, जैसे आमतौर पे कुछ जगह पे हम लोग दाल बाटी खाते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे कॉमन खाना हर पूजा पाठ में और पिकनिक में होता है, उसको हम बोलते हैं भटा गकरिया. भटा हम लोग जब कंडे से हम लोग आग बनाते हैं, उसमें भटा और आलू को रोस्टेड करने के लिए रख देते हैं, और केक्स बना के, मतलब मोटी मोटी रोटी बना के उन्हीं में सेक देते हैं, और उसमें घी लगा के फिर उस भट्टे के भरते के साथ में खाई जाती है. तो भटा ककरिया दूसरा बहुत फेमस चीज है यहाँ पे, जो यहाँ पे खाने में होता है. और सब्जी में हमारे यहाँ पे सब्जी तो कम, हम लोग हमारा दही काफी होता है, मठा हम लोग ज्यादा बनाते हैं यहाँ पे. तो कढ़ी, बेसन की कढ़ी, ये भी बहुत कॉमन चीज है. तो हमारे यहाँ सब्जियां, जो लोकल सब्जियां आमतौर पे होती है, भाजी वो लोग बहुत खाते हैं. हमारे चने की भाजी बहुत ज्यादा खाते हैं इस सीजन में. हमारे यहाँ पे चने, हरे चने की निवाने की सब्जी वो लोग हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं. तो यहाँ जो स्थानीय तौर पर जो पैदा होता है हमारे रूटीन खाने में रहती है. अगर हम नॉनवेज डिशेस की बात करें तो ये भी बहुत रिच है. हमारे यहाँ शिकार, मतलब जो यहाँ ठाकुर शाही खाना है वो तो पूरा शिकार बेसी है. तो आप चाहे वो आप पोक की बात करें, आप चाहे आपकी हिरण के शिकार की बात करें, या तीतर बटेर की बात करें, या खरा मीन्स खरगोश, ये सारे लोग पहले शिकार के समय खाते थे. एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ नॉनवेज पहले यहाँ पे ऑलरेडी रही है, और आज भी जो जब शाही दावतें होती है तो सारा कुछ चलता है.
ओके, सो कितनी सारी चीजें आपने गिना दी। मैं इस वजह से भी एक दिन से तो काम ही नहीं चल सकता, लंबा ही रहना पड़ेगा। So many questions are popping to my mind, but I'm going to ask Dr. Ajay Singh, and I'm also going to tell all the viewers that if you are in Varanasi, if you are in Kashi, then you have to go to Dr. Ajay Singh, because the way he will show you Kashi is an altogether different experience. And I'm going to ask him if he has any questions or thoughts on Orchha. Ma'am, actually, it is coming to my mind as Anurag ji with us, the most experienced and the most knowledgeable guide of the Central India. Always we go for the best, the guide when we choose, the speaker. So thank you for showing us the right path. So we are joining this webinar, and I will love to ask Anurag ji if once he can tell the story of her Alhaudal, that is also the very rich Bundeli, the history, Bundelkhand history. So once we will, organize that webinar. And also once I want to organize a webinar over Maharani Lakshmibai, and as she was born in Varanasi, the Kasi, and she got married in Jhansi. So the two team will be there. One team, they will represent Varanasi, and the second team in leadership of Anurag ji from Jhansi. So that will be the wonderful webinar, and we will show all the. This is like मायका ससुराल टाइप का कहानी होने वाली है. जी मायका ससुराल टाइप का. Very nice. तो बुंदेलखंड का तो वैसे भी इतिहास तुलसीदास जी की जन्म स्थली कही गई, और इसलिए अवधि में आप देखो तो बुंदेलखंडी और अवधि दोनों मिली जुली हैं. आप अयोध्या जाओ तो 1/3 से ज्यादा टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट, धर्मशाला ये सब इन बुंदेलाज लोग के बनाए हुए हैं. तो बहुत ही रिच इतिहास रहा, कल्चर रहा है, और हम लोग आपके निर्देशन में इसी तरह से अच्छे वेबिनार लाते रहेंगे. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. And we look forward to these webinars. As I said, that for me it has almost become like an addiction. On a Saturday, not having a session, not being able to join, a few times it has happened, it breaks my heart, because just watching and being part of the journey of incredible India is so overwhelming, and is also so humbling, because every time that we do a webinar, मुझे लगता है अब तो मुझे बहुत पता चल गया, and then something happens the next Saturday and I'm like, really, ये तो मुझे पता ही नहीं था. That is the beauty of Incredible India, viewers, and that's why the journey is just unending. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 में आह्वान किया था सभी भारतीयों को कि 15 जगह जाइए. आई एम श्योर यू ऑल अग्री दैट 15 से तो बस टिप of the iceberg touch hogi, and you will want to visit so many other places. So yes, we all have to still be careful, because Omicron is still lurking around, and definitely we need to make sure that we are double vaccinated. If you're not double vaccinated, please get yourself vaccinated, and definitely भीड़ में जाएं, बाहर जाएं, मास्क जरूर पहने. And that is part of the protocol. We need to be careful, न सिर्फ अपने लिए, पर हमारे से किसी और को ना इन्फेक्शन पहुंचे, इसलिए भी मास्क पहनना बहुत आवश्यक है. तो डू वेयर योर मास्क. 2 गज की दूरी जहां तक हो सके जरूर रखें, बिकॉज जितनी ज्यादा हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी से इस पूरी पैंडेमिक से हम निकलेंगे, और उतना ही जल्दी हम सब घूम पाएंगे, और अलग अलग जगह पे जाके शॉपिंग कर पाएंगे, खाने खा पाएंगे. इंदौर आप जाएंगे तो वहाँ की आप चाट भी खाएंगे, जलेबी भी खाएंगे. मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पोहा भी मिलेगा आपको नाश्ते में. तो so many things, but that's about Madhya Pradesh today. Every time we try to really do a cross country, because we want you to experience the different flavors of India. So where are we going to take you next week? We're going to take you down south. We're going to take you to Munnar in Kerala. It's a hill station. So if anybody wants to go in summers, if you're missing all the thund that we are experiencing right now, well, you can go to Munnar. And the best part about Munnar is that it also has a lot of tea plantations. So it's going to be a very green journey. It's going to be a beautiful journey. And who doesn't know that Kerala is so, so well managed as far as tourism goes. So don't miss that. So from one amazing state this time, that is Madhya Pradesh, we're going to take you all the way down south next Saturday at 11 a.m. One thing which I wanted to ask
Anurag also, and I think I am right when I say that in aspect about Orchha, it got included in UNESCO's Historic Urban Landscape Project. Yes, ma'am. Is that right, Anurag? Actually, Gwalior and Orchha both are entitled in that one, and the work is going on. They are in the tentative list also. They are, right? They are not declared, but they are in Yes. tentative list. They are in the list there, and there's a lot of work happening. And so please, I think we need to start visiting our places. So much splendor in our beautiful, incredible India. So the journey just goes on, and now next Saturday we'll take you to another journey as we go meandering and traveling through the tea plantations. हालांकि मेरे सपनों की रानी का गाना दार्जिलिंग में गाया गया था, पर वो गाना हम मुन्नार में भी गा सकते हैं. बिल्कुल गा सकते हैं मैम, बहुत सुंदर जगह है ना. So अगले सैटरडे 11 बजे we will be back with another episode of देखो अपना देश. तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, ध्यान रखिए अपना, और हमारे साथ देखते रहिए अपना सुंदर अतुल्य भारत. नमस्कार. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते. सारे उन लोगों को जिन्होंने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो मुझे पर्सनली मेरा मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो जानकारी चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं. मैं ट्विटर पे भी हूँ @अनुराग. मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं, वहां क्वेश्चन कर सकते हैं, या फेसबुक में जस्ट अनुराग शुक्ला खजुराहो आप लिखेंगे तो मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं. जिस तरह क्वेश्चन आप चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सबके क्वेश्चन पढ़ना और जवाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, स्क्रीन की उतनी हैबिट नहीं है, तो सॉरी. और जैसा अजय सिंह जी का सजेशन था, ऑफ कोर्स अलाउद्दीन एक बहुत बड़ा चैप्टर है चंदेलास के बारे में, और बहुत अच्छी अच्छी कहानी है उसमें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें हम काम कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छा आइडिया कि एक तरफ बनारस से अजय सिंह जी, और मैं झांसी से नहीं, घर से नहीं, झांसी में किले से बैठ के हम लोग डिस्कस करें. लाइव करेंगे अनुराग जी. बिल्कुल लाइव सेशन करेंगे. 15 अगस्त कर सकते हैं, या 26 जनवरी, कोई भी वीरता दिवस या उनकी शहादत दिवस पे हम ये काम कर सकते हैं. हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बिल्कुल. मनीष कह रहे हैं आई एम फ्रॉम वाराणसी, एंड मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी अपने घर के लिविंग रूम से ना बात करूं, किसी लाइव लोकेशन पे जाके ऐसे वेबिनार में जुड़ूं. दैट वुड बी सो ब्यूटीफुल. वन लास्ट थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग, this webinar will be also recorded. It has been recorded. It will be posted on the Ministry of Tourism's website. We have YouTube recordings of all our webinars, viewers. So you can revisit this one and all the earlier episodes, the 101 episodes that we have done as part of the general Dekho Apna Desh, and also the 16, including today's webinar, that have been brought to us by our registered guides. All sessions remain recorded versions as a repository on the Ministry of Tourism's website under the banner of Dekho Apna Desh. Therefore, if you've missed some details, or a lot of times जब आप actually travel करने के लिए निकले, तब आप वो episode को visit कर लें, so that you can plan your itinerary कि उस शहर में क्या है, कैसे मैं अपना time plan करूं. So no worries if you've missed some details. Share, खुद भी देखिए, and आगे share भी करिए friends के साथ, family के साथ. वर्ल्ड वाइड शेयर करिए, लोगों को देखने का बताइए कि देयर इज सो मच ब्यूटी इन आवर कंट्री. सो शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड कीप जस्ट विजिटिंग. एंड अनुराग जी के साथ भी जस्ट डोंट गेट इन टच ऑन ट्विटर. एक्चुअली जाइए एंड खजुराहो जरूर देखिए इनके साथ, बिकॉज ही इज एन अमेजिंग गाइड एंड यू विल लव टू do your travels with all of them. As I said, when you go to Kashi, Dr. Ajay Singh is waiting for you to show you the beautiful Kashi. So I think we will take a break now till next Saturday, 11 a.m. Once again, namaste and thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thanks a lot.